बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों उम्मीद तुम सारी ठीक पन पन घर में लास्ट टाइम कर स्टार्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये मज पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वन तमन प्रॉपर्टी या तमन चेंजन ये मज मेटल सह चेंज बे कुन सबस्टेंसस मज प्योर मैटर आसा कि बट अदर देन मेटल यानी बे कुन सबस्टेंस अगर चीज़ सबस्टेंस गि कन्वर्ट बेकिस सबस्टेंस मज तथ चेंज वन केमिकल चेंज और केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर पढ़ा तथ मज पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन तत पढ़ा मेटल्स कर रिएक्ट विद ऑक्सीजन and they form their respective oxides. For example, sodium will form sodium oxide, calcium it will form calcium oxide, aluminum it will form aluminum oxide, iron will form iron oxide. Reaction of metals with oxygen tamic well known example वन rusting of iron and iron rust lagan that is basically reaction of metals with oxygen or reaction of iron with oxygen that rust bana rust basically iron बल्कि iron oxide Fe2O3 तो अम पे पढ़ा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्युथ पढ़ा मेटलिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर तुहद नेचर यूजन दे आर बेसिक मगर कह मेटल्स ऑक्साइड्स दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर एम्फोटेरिक क्या मतलब गो फॉर एग्जांपल नमो एलुमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम ऑक्साइड इट इज एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर मगर कह मेटल्स तुहद ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक क्या गो एम्फोटेरिक ऑक्साइड तथ ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक सबस्टेंस वनो तथ सबस्टेंसेस कुन सात कर बिहेव एज एसिड्स एंड समटाइम्स एज बेसिस यानी सह सबस्टेंस बिहेव कर इन डिफरेंट सिचुएशंस एसिड एज वेल एज बेस तथ ऑक्साइड्स वनो या तथ सबस्टेंस वनो एम्फोटेरिक सबस्टेंस आज वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर वो मेटल्स हाउ दे रिएक्ट विद वाटर अगर जनरल अमिच रिएक्शन नमो metals they react with water and form metal hydroxide or metal oxide and hydrogen gas so metals generally metals they react with water and form metal hydroxide or metal oxide and release hydrogen gas for example अगर नमो different metals ये नमो नमो example of sodium when sodium reacts with water it vigorously reacts with water it quickly reacts with water and oxygen in ये करा react with water ये बनावा sodium hydroxide ये बनो पन metal hydroxide बेच hydrogen नेरा and a large heat is released अच्छे बे heat ते नेरा या इथे पट calcium it also reacts with water and forms calcium hydroxide magnesium it's an example of metal it reacts with water and forms magnesium hydroxide and hydrogen gas aluminum forms aluminum oxide and zinc will form zinc oxide so different metals when they react with water they form either their hydroxides or their oxides मगर ये metals सारी metals equally react towards water ये कह metal युस रिएक्ट करा अगर कोल्ड वाटर तथ सह रिएक्ट करा यानी हाईली रिएक्टिव दैट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर यानी फॉर एग्जांपल सोडियम तो कैल्शियम दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर यानी पे हीट दिन योर कहें युथ एक्सपोज गसा टू वाटर इट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड तथ बरक्स अगर नमो एग्जांपल मैग्नीशियम करा रिएक्ट विद वाटर बट नॉट विद कोल्ड वाटर बट विद hot water so अम खतर जरूरी अगर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड वाटर करनावन अम रिएक्शन खतर जरूरी वाटर इट शुड बी हॉट दैट मीन्स यानी लोग ये पता मैग्नीशियम यूजन इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर देन कैल्शियम एंड सोडियम कैल्शियम तो सोडियम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर देन मैग्नीशियम तवे सोडियम तो कैल्शियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स while as magnesium it reacts with water and forms magnesium hydroxide but here the water which we take that is hot water इथे पर nemos aluminum to zinc they are not so much reactive metals so they neither they react with cold water nor hot water but
steam. And using the gaseous form, highly energetic form, such as water, they react with steam and form their oxides. Yet which have us banaya pan hydroxides. Sodium banaya sodium hydroxide, calcium banaya calcium hydroxide, magnesium banaya magnesium hydroxide. But aluminium to zinc usant, when they react with water, or we can say that when they react with steam, they form their oxides. So yet was yaad metals general reaction when metals react with water, they form metal hydroxide or metal oxide, and hydrogen gas is released. It log reaction which sari metals equally reactive towards water. Metal highly reactive, less reactive. React karini abas kihint. In but which was chemical property metal reaction of metals with acids. Reaction of metals with acids. Which was hydroxide banavan metals. Like their oxides, these hydroxides, they are also basic in nature. For example, sodium hydroxide, it's a basic substance. It is a base. Calcium hydroxide, it is a base. Magnesium hydroxide, it is a aluminum oxide, it is amphoteric oxide. It is already poor. And each kunsat kara behave as acids, kunsat kara behave as bases. Who shows how metal is reactive with acids? Metal is react kara agar system treat karo with some acid. क्या उमन छा पानी रिएक्शन गसान मेटल छा गसान चेंज बे कुछ सबस्टेंस मस किन्ना ये चेक कंडीशन जो तम मेटल यम जन ज्यादा रिएक्टिव आसन which are more reactive than hydrogen. यानी तम मेटल which are more reactive than hydrogen. In those metals which are more reactive than hydrogen, they react with acids. हम छ acids से react करान तब क्या चम बनावा पनुन salt. They form their respective salt. And hydrogen is released here also. Yet hydrogen there metals when they react with acids, magar sari metals react kara acid se kin tam metal which are more reactive than hydrogen. Yem hydrogen khot more reactive asan tam ich kara reaction with acids banavan sta panun metal salt and hydrogen gas. When you most example, suppose is the example metal nemo is sodium. When it is treated with dilute HCl hydrochloric acid, NH symbol of sodium, HCl was hydrochloric acid. Sodium usant, it is more reactive than hydrogen. Ye kya kara ye hydrogen replace kara mist kara displace image jaish ne panish banawa NaCl hydrogen gas gasan release. Potassium usant, it is also highly reactive. It is reactive than hydrogen. When it reacts with acid, dilute acid, say H2SO4, it forms K2SO4, potassium sulfate, and hydrogen is released. So, ye metals which are more reactive than hydrogen, they react with acids and form their respective salts, and hydrogen gas is released. Ye आज तमत पायस reaction metals अगर summarize करो गोडनिची पूरस reaction of metals with oxygen यथ मज pour metals they react with oxygen and form their oxides, respective oxides which are basic in nature or amphoteric, some of them. The porous reaction of metals with water. When metals react with water, they form either metal hydroxide or metal oxide, and hydrogen is released. Number 3, using a porous reaction of metals with acids, atmos porous. Some metals which are more reactive than hydrogen, they react with acids and form metal salts, and hydrogen gases released. Inshallah karo is continue working the chemical properties of metals in our next lecture. Till then, Khuda Hafiz.